Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is Ustad Academy. I am Salahuddin. As usual students, कि हम इस YouTube चैनल में जो सोहेल अफजाल की टेक्स्ट बुक है उसके जो प्रॉब्लम्स हैं उसके हर चैप्टर के एंड में हम उनको हल करते हैं. Today in this video we are going to solve problem number 6, chapter number 8 on page number 359. आप इसकी अपनी स्क्रीन के ऊपर प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग सोहेल अफजल पार्ट 2 अकाउंटिंग की बुक आप यू कैन सी एंड आल्सो यू कैन सी द चैप्टर नंबर 8 पार्टनरशिप अकाउंट्स पार्ट 3. दिस चैप्टर इज अबाउट द रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर्स. इस चैप्टर में व्हाट वी स्टडी, हम ये स्टडी करते हैं कि इन केस ऑफ एनी रिटायरमेंट एंड डेथ, अगर कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है या उसकी डेथ हो गई है तो उसका जो शेयर है उसको हमने कैसे कैलकुलेट करना है, हाउ टू कैलकुलेट द शेयर एंड हाउ टू पे देम, हाउ टू पे टू द रिटायरिंग पार्टनर, या उसके जो वर्सा है उसके जो रिटायरिंग पार्टनर जो डेथ जिसकी वफात हो चुकी है पार्टनर की, उसके जो वर्सा को हमने पैसे कैसे पे करने हैं और कितने पे करने हैं. दिस इज आवर टॉपिक इन चैप्टर नंबर 8. As I discussed with you, students, you can see the question number 6 on page number 359. ये क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 8 का. इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था वो क्वेश्चन नंबर 5 किया था. इसी पहली वाली वीडियो में, इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 को हल करेंगे इंशाल्लाह. सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है. ही सेज ए बी एंड सी वर कैरिंग on business in partnership sharing profit and loss in the ratio 3:1. ये एक पार्टनरशिप फर्म है जिसमें 3 पार्टनर्स हैं. दे आर कैरिंग अ बिजनेस और जो प्रॉफिट शेयर रेशियो है 3:2:1 है. इट मींस दैट ए इज गेटिंग 3/6, बी इज गेटिंग 2/6, सी इज गेटिंग 1/6. ये 6 कहाँ से आया? 6 इफ यू ऐड ऑल 3 फिगर्स इट विल बी 6. सो ए का जो हिस्सा है वो 3/6 है, बी का 2/6 और सी का 1/6. ऑन 31 दिसंबर 2016 बैलेंस शीट ऑफ द फर्म स्टूड एज फॉलो. जो 31 दिसंबर 2016 को जो बैलेंस शीट है वो एग्जामिनर ने आपको दी हुई है इन द क्वेश्चन. ऑन द एसेट साइड यू कैन सी कैश, डेटर्स, स्टॉक्स एंड बिल्डिंग्स. ऑन द लायबिलिटी साइड दैट इज सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड द कैपिटल अकाउंट्स. अगर हम एसेट्स को देखें तो एसेट्स इन द शेप ऑफ कैश इज 5,900, डेटर्स आर 8,000, स्टॉक आर 11,690, बिल्डिंग्स आर 323,000. On the liability side, sundry creditors are 13,590, capital accounts of A, B and C are 15,000, 10,000, 10,000 respectively. Total amount of all these capital accounts is 35,000, both sides 48,590, 48,590. This is the complete balance sheet. B retired on the above mentioned date on following terms. B जो है वो रिटायर हो रहा है. कब रिटायर हो रहा है? 31 दिसंबर 2016 को, क्योंकि उसने कहा हुआ है ऑन द अबव मेंशन डेट. अबव मेंशन डेट 31 दिसंबर 2016 है. तो बी जो है रिटायर हो रहा है इस डेट को. What are the following? What are the terms? Terms are building be appreciated by 7,000. बिल्डिंग की वैल्यू 7,000 बढ़ानी है. वी हैव टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग बाय 7,000. एप्रिशिएटेड मीन टू इंक्रीज द वैल्यू. बिल्डिंग की वैल्यू हमने एप्रिशिएट करनी है. वी हैव टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग बाय ₹7,000. इट मीन्स दैट फर्स्ट वी विल सी द फिगर इन द बैलेंस शीट. बिल्डिंग जो करंट वैल्यू है दैट इज 23,000. इन 23,000 वी विल ऐड 7,000, दैट विल बी 30,000. Provision for bad debts be made 5% on debtors. Student, this point is very much important. You must know what is meant by provision for bad debts. सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए what is meant by provision for bad debts. Provision for bad debts mean expected value that may not be recoverable from the debtors or the receivables. In other words, students, हम ये कह सकते हैं कि 5% जो है
डेटर्स की वैल्यू में से 5% ऑफ ₹8,000 मे नॉट बी रिकवरेबल, मे नॉट बी यानी इट इज एक्सपेक्टेड, दिस इज नॉट द कंफर्म वैल्यू। इन योर एग्जाम इन एमसीक्यूज शॉर्ट क्वेश्चंस आपको एग्जामिनर एक पॉइंट दे सकता है, एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन देगा 3 नंबर का। ही विल से differentiate between bad debts and provision for bad debts. Students, you must know the difference between bad debts and provision for bad debts. Bad debts means the amount that is confirmed which is irrecoverable, and the provision for bad debts mean the amount which may not be recoverable. इन अदर वर्ड्स बैड डेट्स वो वाली अमाउंट होती है जो कि रिकवरेबल बिल्कुल नहीं होगी, दैट इज कंफर्म्ड। एंड प्रोविजन फॉर बैड डेट्स मीन द अमाउंट विच मे नॉट बी रिकवरेबल, ये कंफर्म्ड अमाउंट नहीं होती, दैट मे बी इंक्रीज, दैट मे बी डिक्रीज। In your exam, if the examiner asks you differentiate between bad debts and provision for bad debts, you should write that the bad debts, the amount bad debts is the amount which is confirmed that it is not recoverable, and the provision for that bad debts mean the amount which may not be recoverable. This will be 3 marks question, और आप अगर ये लफ्ज ये सेंटेंस लिख दें तो आपको 3 नंबर भी आपको एग्जामिनर मिल जाएंगे शॉर्ट क्वेश्चन में से। एमसीक्यूज भी इस क्वेश्चन में से आ सकता है, वो आपको एमसीक्यूज भी दे सकता है कि व्हाट इज मीन बाय प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। क्वेश्चन नंबर 3, रिक्वायरमेंट नंबर 3 सेज goodwill of the firm be valued at ₹9,000 and adjustment in this respect be made without raising the goodwill account. क्वेश्चन ये कहता है रिक्वायरमेंट नंबर 3 सेज कि गुडविल शुड बी 9,000। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, यू मस्ट नो व्हाट इज मीन्ड बाय गुडविल। गुडविल इज अ फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस एसेट मीन द एसेट विच इज नॉट टचेबल, नॉट सीनेबल। ये एक ऐसा एसेट होता है जो जिसको हम टच नहीं कर सकते, जिसको हम देख नहीं सकते, लाइक अदर एसेट्स। वी हैव टू ट्रीट द गुडविल जस्ट लाइक द एसेट्स। तो उसने कहा कि इसकी जो वैल्यू है 9,000 है। अब यू कैन सी दिस अमाउंट, दिस गुडविल इज नॉट शोन इन द बैलेंस शीट। इसका मतलब ये हुआ वी हैव टू रेज द गुडविल अकाउंट, एंड देन ही सेज एडजस्टमेंट इन दिस रिस्पेक्ट बी मेड विदाउट रेजिंग द गुडविल अकाउंट। कि पहले वो कहता है कि गुडविल अकाउंट को 9,000 है उसकी वैल्यू, आफ्टर दैट ये भी कहता है कि गुडविल अकाउंट को हमने रेज नहीं करना, वी हैव टू क्लोज द गुडविल अकाउंट। इस पूरी कंडीशन नंबर 3 का पूरा मतलब ये हुआ कि हम 9,000 से गुडविल अकाउंट को क्रिएट करेंगे और फिर इसी 9,000 को गुडविल अकाउंट को हम क्लोज भी करेंगे। फर्स्ट वी विल ओपन द अकाउंट with ₹9,000 and then we will close the account with ₹9,000। इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट स्लाइड में इसको भी डिस्कस करेंगे। रिक्वायरमेंट नंबर 4 says ₹5,000 be paid to B immediately। वो ये कहता है कि जो भी अमाउंट we have to pay to B, it should be out of this amount 5,000 should be paid immediately। हम फौरी तौर पर 5,000 रुपया B को देंगे, and the balance due to him be treated as loan carrying interest 6% per annum। और जो बाकी अमाउंट बचेगी वो हम उसको लोन कंसिडर करेंगे 6% इंटरेस्ट रेट के साथ। What is the requirement? He says pass journal entries to record the above transactions and show the B's capital account। अब एग्जामिनर आपसे ये कह रहा है कि जर्नल एंट्री करें और बी का कैपिटल अकाउंट भी क्रिएट करें एट द टाइम ऑफ द रिटायरमेंट। यहाँ पर उसने आंसर दिए हुए कि रीवैल्यूएशन अकाउंट का जो बैलेंस आएगा दैट शुड बी 6,600 और द बी की जो लोन अमाउंट शुड बी 10,200। आई होप स्टूडेंट आपने ये क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर लिया होगा। नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट स्लाइड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन यू कैन सी ऑन द राइट साइड ऑफ द screen। Let us start to solve this question now। Step number 1, we have to pass the journal entries।
बिल्डिंग अकाउंट 7,000 इज डेबिटिंग, ये 7,000 से डेबिट क्यों हो रहा है? बिकॉज बिल्डिंग बी एप्रिशिएटेड बाय 7,000, द वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग इज नाउ इंक्रीजिंग, so we will debit the building account with rupees 7,000 and the credit will be revaluation account. जब भी हमने रिटायरमेंट या एडमिशन ऑफ द पार्टनर करनी होती है तो वी हैव टू क्रिएट a nominal account. This is called revaluation account. Students, you must know what is meant by revaluation account. Revaluation account actually is a nominal account that is created and then it is closed. ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है कि एक्सप्लेन द टर्म ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट, ये आपके एमसीक्यूज में भी आ सकता है. सो कीप इन योर माइंड स्टूडेंट्स, यू मस्ट नाउ रीवैल्यूएशन अकाउंट इज अ टेम्परेरी अकाउंट एंड इट इज अ नॉमिनल अकाउंट. नॉमिनल अकाउंट मीन द टेम्परेरी अकाउंट. Now revaluation account is debiting and debtors account crediting. This is according to the requirement number 2. Provision for bad debts we made 5% on debtors. यहाँ पर देखें कि revaluation को डेबिट हो रहा है, डेटर्स क्रेडिट हो रहे हैं. Why debtors are crediting? Because the value of the debtors is now decreasing. कितनी अमाउंट से डिक्रीज हो रही है? 5% से. आप क्या करेंगे? 8,000 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाई 100, that is a 5% of 8,000. This is 400. तो revaluation को डेबिट एंड डेटर्स आर ऑन क्रेडिट. इन अदर वर्ड्स के रिवैल्यूएशन को जब हम बनाएंगे तो उसके क्रेडिट में लिखेंगे बिल्डिंग अकाउंट और जब रिवैल्यूएशन तो और उसके डेबिट में लिखेंगे डेटर्स अकाउंट. क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड में है, इसके डेबिट में डेटर्स अकाउंट लिखेंगे और उसके क्रेडिट साइड में बिल्डिंग अकाउंट लिखेंगे. The third is goodwill account. Goodwill of the firm is 9,000 as is given, so it will be debit, and credit will be capital account A, capital account B and capital account C. इसको हमने 9,000 को we have to divide 9,000 according to the old sharing ratio, that is 3:1. हम क्या करेंगे? 9,000 multiplied by 3/6 for A, and for B would be 9,000 multiplied by 2/6 and for C will be 9,000 multiplied by 1/6. Goodwill transfer to all partners with 3:1 ratio. This is the requirement number 3. But this is not complete. इसमें उसने यहाँ तक हमने लिखा हुआ है goodwill of the firm be valued at 9,000. ये हमने इसकी जनरल एंट्री कर दी 9,000. Next he says and adjustment in this respect be made without raising the goodwill account. अब इसका मतलब ये है कि वी हैव टू क्लोज द गुडविल अकाउंट. गुडविल अकाउंट को क्लोज कैसे करना है? वी विल डेबिट द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ ए एंड सी. बी को हम डेबिट नहीं करेंगे क्योंकि बी इज नाउ रिटायरिंग एंड गुडविल अकाउंट विल बी क्रेडिट बाय 9,000 एंड दिस टाइम जो शेयरिंग रेशियो होगी दैट विल बी 3:1. ये 3:1 क्यों शेयरिंग रेशियो हुई? क्योंकि अगर बी की शेयरिंग रेशियो निकाल दें तो जो एग्जिस्टिंग शेयरिंग रेशियो बनती है वो है 3:1. So this 9,000 should be divided between A and C with 3:1. ये कैसे होगा? 9,000 multiplied by 3/4 for A, 9,000 multiplied by 1/4 for C. Now students, requirement नंबर जो 3 है वो भी कंप्लीट होगी हमारी. जो जनरल एंट्री नंबर 1 है दैट इज अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट नंबर 1. जनरल एंट्री जो 2 है दैट इज अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट नंबर 2 एंड जो जनरल एंट्रीज 2 जनरल एंट्री जो बनी है वो 3 वो दैट इज अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट नंबर 3. नेक्स्ट ही सेज 5,000 टू बी पेड टू द इमीडिएटली. लेट अस गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. Step number 2, prepare the revaluation account. Now we have to prepare the revaluation account. Revaluation account में देखें on the debit side we are writing 400 as a debtors because amount is decreasing from debtors and building amount is increasing. This is on the credit side of the revaluation account. In simple words students, आपने ये ज़हन में रखना है कि जब आपने रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है तो जिन जिन एसेट्स की वैल्यू बढ़ेगी यू हैव टू राइट ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द रीवैल्यूएशन अकाउंट और जिन जिन एसेट्स की वैल्यू कम होगी यू शुड राइट ऑन द डेबिट साइड ऑफ द रीवैल्यूएशन अकाउंट. अगेन लेट मी एक्सप्लेन यू कि जो एसेट्स की वैल्यू बढ़ेगी हम उस वैल्यू इंक्रीज वैल्यू को
क्रेडिट साइड में लिखेंगे ऑफ द रीवैल्यूएशन अकाउंट, और जिन एसेट की वैल्यू कम होगी उनको हम डेबिट साइड रखेंगे इन द रीवैल्यूएशन अकाउंट। नाउ वी विल टेक द बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर कैसी आएगी, 7000 में से 400 माइनस कर दें तो रिमेनिंग अमाउंट इज 6600। दिस इज equal as the answer. You can see the answer in the revaluation bond answer 6600, और ये भी हमारी 6600 पूरी की पूरी बैलेंस शीट जो बैलेंसिंग फिगर है वो सेम आ रही है। दिस 6600 should be divided among the all the partners A, B and C according to the old sharing ratio। 6600 multiplied by 3/6, 3 जो है वो A का शेयरिंग रेशियो है बाई 6 टोटल ऑफ ऑल दीज 3, तो 3/6 6600 मल्टीप्लाई बाई 2/6 फॉर B, 6600 मल्टीप्लाई बाई 1/6 फॉर C। तो जो A का शेयर बनता है वो दैट इज 3300, B का जो शेयर है दैट इज 2200 एंड C का जो शेयर बनता है 1100। द टोटल ऑफ ऑल दीज फिगर वुड बी 6600। Step number 3 in the we will have to prepare the capital account of B। कैपिटल अकाउंट ऑफ बी जो हमने कैपिटल बनाना है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द एग्जामिनर, वी विल स्टार्ट फ्रॉम द ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस क्या है हमारा 10,000 रुपया, दैट इज गिवन इन द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट से वी विल टेक द ओपनिंग बैलेंस, देन वी विल गो फॉर द रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट में जो बी का जो हिस्सा है दैट इज 2200, वो हमने 2200 ले लिया। And then we will go to the goodwill account। Goodwill account, we have already calculated goodwill in the last slide। I want to show you again। जिसमें देखें कि goodwill account in the journal entry number 3 में जो goodwill account है that is 9000 multiplied by 2600, that is 3000। This is the share of the B। Now we see that opening balance 10,000, revaluation account balance 2200 for B, goodwill account 3000 for B। अगर हम तीनों को टोटल करें that is 15,200। Cash 5,000 we have to pay immediately according to the requirement number 4। He says rupees 5,000 to be paid to B immediately। तो हमने 5,000 रुपया तो B को पे कर दिया। Out of 15,200 minus 5,000 it amount is 10,200। ये 10,200 की जो अमाउंट है that is considered as a loan that will be paid later by the A and C। लेकिन जब तक A और C इसको पे नहीं करेंगे they will pay 6% interest as per requirement number 4। और ये आप देख सकते हैं कि जो 6% लोन है दैट इज 2200। इट इज आल्सो आंसर भी, इसमें आंसर भी 10,200 का ही आ रहा है। जी स्टूडेंट्स, आई होप इंशाल्लाह ये आपने क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर लिया होगा। इट इज नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इन द नेक्स्ट वीडियो वुड बी क्वेश्चन नंबर 7, पेज is पेज नंबर 359, चैप्टर नंबर 8। आप ये क्वेश्चन नंबर 7 अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में आप ये क्वेश्चन भी आपको मिलेगा, इसको हम सॉल्व करेंगे और इसको साथ साथ हम डिस्कस भी करेंगे। Until that time students, अल्लाह हाफिज। आई होप दिस वीडियो विल बी यूजफुल फॉर यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स।